As India starts its G20 presidency, the world's fastest growing economy endures geopolitical change, making it pertinent to analyze what lies ahead. Times Network, through its flagship platform India Economic Conclave, continues the legacy of championing the economic agenda of the country. The 9th edition of India Economic Conclave focused on India as the emerging third superpower. IDFC First Bank presents the India Economic Conclave, powered by Google, harnessed conversations to transform India's economic aspirations into action through specially curated sessions of thinkers, policymakers, economists, business leaders, and global influencers. The event not only got to witness the thought-provoking idea towards the development of the nation, but also experience an immersive performance by 3-time Grammy Award winner Ricky Cage. Join hands and sing this world song. Reach out, let us join hands and sing this one song. In this episode, Anil Agarwal, founder and chairman Vedanta Resources, Nikhil Kamath, founder and CEO Zerodha, and Amit Jain, CEO and co-founder Dekho Group, discuss unleashing dreams and empowering India's entrepreneurs in a panel discussion moderated by Navika Kumar, group editor, Times Network, and editor-in-chief, Times Now Bharat. Mr. Anil Agarwal, you're the original startup guy. एक बार पहले हमने बातचीत की थी और आपने कहा था आपकी ज़िंदगी बिहार से शुरू हुई. आज मैं जानना चाहती हूँ, ये देश नंबर 3 है स्टार्टअप इंडिया में, लेकिन एक स्टार्टअप बहुत साल पहले शुरू हुआ था. वो जर्नी क्या थी और तब और अब में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? सबसे पहले थैंक यू निविदा जी एंड टाइम्स ग्रुप, विनीत जैन and all our people. Thank you very much for allowing me to be here. It's a pleasure to be with you. पहले और अभी में यही फ़र्क है कि 17 साल तक की उम्र में जब मैं रेल की सवारी करता था तो कभी भी मेन दरवाजे से नहीं घुस पाया, हरदम खिड़की के रास्ते से ही घुसना पड़ता था, इतनी भीड़ रहती थी. तो वो फ़र्क आया है कि आज ईश्वर की कृपा है कि हर सुविधाएं हैं. और सबसे बड़ी बात है, उस समय कुछ भी करते तो लोगों को पता नहीं चलता था. अभी सब चीज़ इन लोगों की इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, जो कहीं भी कुछ भी करते हैं, एवरीबडी नोज. एट इन आवर टाइम इट वाज एब्सोल्युटली द गैप बिटवीन व्हाट पीपल नो एंड व्हाट इट इज़, इट वाज ए डिफरेंट. बट दिस इज़ अ टाइम फॉर देम. टुडे आई हैव कम स्पेशली दैट इज़ अ टाइम for the youngster like them to mentor us. If we have that mind that if they can mentor us, that will be the biggest achievement we can have. Amazing, amazing. Which just shows, Nikhil Kamath, that Mr. Anil Agarwal, the young Mr. Anil Agarwal, is still here and he's learning and wants to learn newer ways of getting into the game. What do you think about that spirit, and how has it been for you? Because when you need to mentor him, you have to tell him your experience of being, a co-founder of a startup like Zerodha, which has changed the definition of how stocks and share market is done. You've given all the old people there, all the big houses there, a run for their money. How did it work for you? How did the journey, how did the thought begin, and how did you innovate? No, thanks. I think Anil is being, very humble by saying, we can mentor him. I think as a businessman, just being able to handle volatility is really, I think, the key, right? And the fact that Anil is still so curious at this age after spending so much time to learn, I think that's really what differentiates great businessmen from everyone else, right? As in, about my journey as an entrepreneur, I think what has changed in the last 20 plus years of me trying to build something is I was told to go get a real job for a lot of the first many years, and today I think, what has changed is that, there is entrepreneurs are celebrated, right? And that's really what is required for India, for the country to kind of grow inclusively. You need more entrepreneurs, right? As in, there is no other way we're going to do it.
So the most excited I get is the fact that, today when my nephews, my niece, or even my distant, friends, kids, etc., who are starting businesses, parents are not saying, don't do this, or, the society is not saying, don't do this. People are encouraging people to go build businesses, which is what has changed, I think, in the last 10, 15 years, thanks to many things that has worked well for India. Anil Agarwal ji, did anybody stop you ke business? How can you talk about business? And it's a big bad world. Kya karoge? Kahan se aayenge paise? Because you're talking about trains and how you got into the trains through the windows. Bina ticket ke jaate the? टिकट उसमें पता नहीं, लेकिन ये बात सही है कि ट्रेनें बहुत जाम रहती थी। और ये हम लोग जब इंडिपेंडेंस हुई तो देश को आगे बढ़ना था और एंटरप्रेन्योर नहीं थे। टाटा बिरला दो ही नाम था जो कि इंडस्ट्री में थे, इसके अलावा कोई नाम नहीं था। और उस समय गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा और वो बोलते थे ये हमारे टेम्पल हैं। आप ऑयल, स्टील, कॉपर, पोर्ट, एनीथिंग यू टॉक अबाउट, 300-400 उन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगाई। वो हमारे देश को डिफरेंट लेवल पे ले गए। वो एरा ख़त्म हो गया। वो जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट रियलाइज़ कर रही है, उसको फास्ट रियलाइज़ करना है कि हमारा हिंदुस्तान ये एंटरप्रेन्योर की वजह से हो रहा है। एंटरप्रेन्योर इतने ज़बरदस्त हो गए हैं कि अमेरिका से आगे लेके जाएंगे हमारी कंट्री को, क्योंकि वो दैट्स द प्लेस ऑफ एंटरप्रेन्योर। हमारी कंट्री प्लेस ऑफ एंटरप्रेन्योर है। हमारे यहाँ एक फ़ायदा है, हम संस्कारी हैं, हमारे यहाँ संस्कार हैं, हमारे यहाँ वैल्यू सिस्टम है। हम अपने माँ बाप के चरण छूते हैं, हम अपने सोसाइटी की कदर करते हैं। वो जो तड़का लग रहा है, जो कि अमेरिका में तड़का नहीं है, वो हमें बहुत दूर तक लेके जाएगा। Let me ask you, Mr. Amit Jain. Amit Jain ji, कार देखो, Shark Tank. How did you begin your journey? How did you start कार देखो? And लोग जानना चाहते हैं कि क्या आप बड़े रिसोर्सफुल फैमिली से आते थे, क्या रिसोर्सेज थे, कैसे शुरू किया, where did the thought come from, and how did you come in your journey up to here? तो मेरा जर्नी चालू 2007 में अपने भाई के साथ। छोटा भाई मेरा साथ में को फाउंडर है अनुराग। आई थिंक जो एक चीज़ मेरे को लगती है, जो एजुकेशन मिली, IIT गया, पढ़ाई करी, तो वहाँ सपने थोड़े बड़े हो गए थे। तो सबसे बड़ी जो चीज़ मेरे को लग रही जो चेंज आ रहा है इंडिया में, वो ये है कि लोग अब एटलीस्ट एम बिग करते हैं, एम्बिशन ज़्यादा है। तो जब 2006 में मेरे फादर की एक्चुअली डेथ हो गई थी, तो फिर हमारा वैल्यू सिस्टम, जैसे आपने बोला सर, तो वैल्यू सिस्टम ने बोला कि अपने दादा दादी जिंदा थे हमारे उस टाइम पे, तो मेरे को लगा दादा दादी मम्मी का ख्याल रखने के लिए हमें मूव बैक करना चाहिए जयपुर, रादर देन उनको बैंगलोर लाएं। तो कंपनी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में चालू हुई थी कि मेरे को अपनी फैमिली का टेक केयर करना था। तो दैट वैल्यू सिस्टम काइंड ऑफ गॉट मी बैक टू जयपुर। अब जयपुर में कोई IT कंपनी थी नहीं, तो जॉब मिल नहीं सकती थी। मैं कोडर था, तो मैंने लाइफ में कोडिंग करी 15 साल। तो वहाँ पर हमने एक सॉफ्टवेयर कंपनी चालू करी दोनों ने मिलके, और बिल्कुल लिटरली गैरेज से चालू करी। और रिसोर्सेज अगर आप पूछोगे तो केवल दिमाग था और 2 लैपटॉप्स हमारे पास। दैट्स वेयर वी स्टार्टेड। और कहीं ना कहीं मुझे क्या लगता है कि नहीं, कर्मा होता है कि आप अच्छा करते हो तो वो वापस आपको कहीं और से आ जाता है वो। तो वी मेड अ बोल्ड मूव कि आते हैं नौकरी छोड़ के। उस टाइम EMI भी थी, घर खरीदे हुए थे कुछ, तो बड़ा उस टाइम पे रिस्क लेना बड़ा मुश्किल होता है जब आपके EMI बंदी होती है। तो आपने उस टाइम जब रिस्क लिया तो रिवॉर्ड अपने आप लेटर ऑन जर्नी में आता गया। और हमने 7 साल तक बिना फंडिंग के चलाई प्रॉफिटेबली कंपनी। तो एक DNA बना कि किस तरीके से आप कम रिसोर्सेज में अपनी कंपनी चला सकते हो। तो आई थिंक दैट रिगर ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसमें फेलियर ज़्यादा मिलेंगे पर बड़ा मज़ा आता है। मतलब जब जर्नी जो है बड़ी सुखद होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इतना सारा मज़ा आ रहा होता है, इतना हैप्पीनेस मिल रहा होता है। जो टीम शुरू में आई थी हमारे साथ, वो आज भी हमारी मैनेजमेंट टीम है। तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई एम लाइक फील मोस्ट ग्रेटफुल अबाउट, कि इतने अच्छे लोग मिले इस जर्नी के अंदर, और ये सफ़र ऐसे कटा है कि अभी चालू हुआ है ऐसा लगता है। एंड Anil Agarwal ji, the issue also is ideas win. आपने इस देश में सबसे बड़ी मिनरल और माइनिंग कंपनी शुरू की। पहले तो रिसोर्सेज की बात आती है कि रिसोर्सेज कहाँ से, एंड देन हाउ डू यू स्केल अप? व्हाट डू यू थिंक इज मोर इम्पॉर्टेंट? इज इट द रिसोर्सेज? इज इट द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्क्स? और इज इट inviting investments? What according to you
is the formula for success? नो आपने आइडिया की बात की तो मैं रात भर आइडियाज लगाता रहता था और था कि कब ये सूरज उगे, मैं तैयार होके अपने आदमियों, अपने दोस्तों, अपने लोगों से जाके अपने आइडिया की बात करूं। और मैं इतने उत्साह से जाता था, और जब मैं आइडिया की बात करते कहता हाँ ये क्या आइडिया है, और मैं ऊपर से नीचे आ जाता था। आज के दिन मैं खराब से खराब आइडिया लेके जाता हूँ, वाह वाह वाह। ये चेंजेस आता है और उसको आप वॉच करते हैं। हिंदुस्तान में आप फंडामेंटल जाइए, हमारे पास 70% जो हमारे पास पैसा है वो हमारे इंपोर्ट में जा रहा है, फंडामेंटल। एंड व्हाट इज द इंपोर्ट? 50% गोज इनटू द मिनरल। व्हाट इज ऑयल एंड गैस, गोल्ड, कॉपर, fertilizer, wood, shipping, anything you talk about, I really don't understand. हम अपने माँ बाप की जैसे पूजा करते हैं वैसे हम अपनी धरती माँ की भी पूजा करते हैं, और हमारी धरती माँ कह रही है कि मेरे पास सब कुछ है, आई एम ए जोलॉजिस्ट। दिस इज द हाई टाइम कि हम ये इंपोर्ट बंद करके अपने रिसोर्स को डेवलप करें। और इसको जो हमारे बच्चों के अंदर डाला है कि माइनिंग खराब है, वॉल स्ट्रीट ने लिखा है माइनिंग इज द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बिकॉज उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट रिसोर्सेज, विद अबव द ग्राउंड वी हैव डन वेल, वी हैव बीन एबल टू सस्टेन आवर सेल्फ एज फार एज द फूड इज कंसर्न। बिलो द ग्राउंड वी हैव एवरीथिंग, द अदर थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक। हमारे देश का जो इलेक्ट्रॉनिक है, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपके चिप्स, सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले ग्लास। दिस इज़ द फंडामेंटल। आज दुनिया नहीं चाहती है कि हिंदुस्तान रिसोर्स डेवलप करे, इंपोर्ट बेस रहे, और हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक डेवलप करे। वो क्या बोलती है कि आप स्मार्टफोन बना लो, आप लैपटॉप बना लो, लेकिन चिप्स आप हमसे खरीदो। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हम सेमीकंडक्टर बनाएंगे, हमने कफन बांध रखा है सिर पे, हम ग्लास बनाएंगे। एंड आई एम लुकिंग पीपल लाइक देम, व्हाट दे हैव डन टुडे। पीपल आर, अर्लियर ऑल आवर पीपल वर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, बाइंग ए लैंड, गिविंग टू द जमींदार, लैंड मनी लेंडर। These people have changed. It's hardly freak of anything. They can come, they can make money, they can create. Today the world, whatever money is, 60% money is in the stock. And they are revolving. They are bringing this money, they are circulating. This will change. And I have always said, youngster, work for people who is entrepreneur. Don't go straight to be entrepreneur. Work for entrepreneur. Even if you have to pay him something, go and work for him. Then you will learn. So Nitin, clearly, you've changed the way business is done. How did you do it? When did you sense, that there was a need for something like this? The fintech side of it, and how difficult was it when you started? Must say, we all admire you, how you thought of, and how freak of a small money people can come on the platform. Earlier, we always had something in mind. We are trading, beach wala zyada paisa nikal lega. Here, transparent manner, people are trading. The fear of the middleman has gone. No, thanks for all the kind words. No, it didn't start off being what it is today, right? As in, when we started, I was very active in a lot of online trading communities. And,
And there was a problem statement, which is the trading costs are very high. And financial services firms are generally very opaque in the way they work. Right? So when we started off, there was no tech, etc. It was on top of vendor products. We were trying to solve for these two problems. And what we realized is to solve for transparency, you cannot differentiate your customers. You need to have one offering for all your customers. In hindsight, it seems like it was all planned, but it wasn't. It was just an instinct. It just said that, this is how you should probably build this. Because this having one deal for all our customers has also helped us significantly in terms of scaling the business. We've gone from like a million customers to 11 million customers without adding any people on the team. And the reason for that efficiency... 1 million to 11 million without adding people in the team. Yeah, because, amazing. Yeah, that's because you kept the business simple, and it's just one offering. And we use technology today to kind of leverage efficiency. Bring in efficiency wherever possible. So yeah, the business started with those two things. As we grew, we realized, financial literacy in the country is very little. We need to do something about it. So we built this platform called Varsity, which is our education. It's completely free and open source. It's probably the second or third largest such initiative around the world on capital markets. As we grew, we realized that India needs better products. I got very lucky to find Kailash, who heads our tech. So around him, we started building our products. Around 2016, we realized that maybe we cannot solve all of this ourselves. We need to collaborate. So we opened up APIs to our business and invited startups to come build on top of us. So think of Android and Play Store, right, as in something like that. And so startups started coming and integrating on top of us. When they came, we realized that they needed capital as well. By then the business was making money. We set up Brain Matter, which is a fund incubator. We started investing in these companies as well. And then I don't think, I'm not the kind of guy who believes in having goals, etc. The idea is, objective is you get up every day and do something better. And then it compounds over time, right? As in you keep doing small things and, eventually it adds up. I think there are 2-3 tipping points in this journey. One was Aadhaar for online onboarding. Because until then, you could not onboard a customer online. It was a 40-page document. I think the second big tipping point was really in 2020 when COVID happened, right? Because there was this whole generation of people who were sitting on the fence thinking if I should invest in the market, not invest. People had more time because they were working from home. They had more money because they were not spending as much. And the stock markets was doing well. And so these were like 3 potent forces that came together and the markets expanded. So what would have otherwise taken maybe 5 to 10 years happened in 2 years in terms of expansion. So we got extremely lucky to be at the right place, right time, with the right initiative. So, none of this was planned. It's just, we had the right products and initiatives, but I think we just got lucky to be there at the right time. Okay, all right. So that should be encouraging for a lot of people. Amit Jain ji, अब तो सबको चाहिए गाड़ी, स्कूटर, और जिसके पास गाड़ी है उसको मर्सिडीज चाहिए, तो कार देखो पे सब कुछ. But does the first idea work? That is what most entrepreneurs want to understand. Because a lot of people, have this thing holding them back. Will it require a lot of investment? What if it doesn't work? What do you do then? I want you to tell, viewers and our audience here, कैसे होता है? How do you get over? What is the thought process? What is the psychology of an entrepreneur? आई थिंक जो आइडिया है वो चलते नहीं है, मोस्टली रियलिटी है लाइफ में. मैंने कम से कम 10 स्टार्टअप किए होंगे. एक आप लोगों को पता है, बाइक देखो, इंश्योरेंस देखो, कार देखो, क्योंकि पॉपुलर हो गया है. बट उसके पहले मैंने बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की भी साइट बनाई है. मैंने बहुत तरीके के काम किए. मैंने मोबाइल भी बेचे ऑनलाइन और बहुत सारे चला के बंद भी किए. रियलिटी है कि एक ज़ील थी कि कुछ करना है बड़ा. और जब मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा था तो आई जस्ट मेड अ गोल कि मेरे एक बड़ी कंपनी बनानी है. तो मैंने बोला एक नंबर से क्वांटिफाई कर देते थे. मैंने बोला $1 बिलियन कंपनी बनानी. तो मैं और अनुराग गए, मेरा भाई, वी अपडेटेड अ लिंक्डइन प्रोफाइल कि वी विल बिल्ड $1 बिलियन कंपनी. वो कैसे बनाएंगे पता नहीं, बिलियन में जीरो कितने वो पता नहीं, बट एक नंबर बड़ा होता था उस ज़माने में. तो वहाँ से जब आप एम लेते हो ना, तो फिर आप चीज़ें करते हो, फिर आपको लगता है यार इससे तो नहीं पहुँच पाओगे, इससे तो नहीं पहुँच पाओगे. देयर इज अ कांस्टेंट परस्यूट ऑफ फाइंडिंग समथिंग दैट विल बिकम एज लार्ज. व्हाट आई रियलाइज इज कि आपकी पर्सनल नीड से कोई चीज़ इमर्ज करती है ना, तो आप ज़्यादा लंबा खींच पाते हो, क्योंकि आपको फिर वो काम नहीं लगता, आपको खुशी हो रही थी वो करने में. तो कार का शौक हम दोनों भाइयों को काफ़ी था. तो हम लोग ऑटो एक्सपो गए थे 2008 में प्रगति मैदान में.
हम बड़ी अच्छी गाड़ियाँ देखी, फिर हम लोग लौटे तो हमने देखा कि यार वो ऑनलाइन मिल नहीं रही इन्फॉर्मेशन जो हमने देख के आए थे। फिर हम अगले दिन वापस गए, सारे ब्रोशर इकट्ठे किए और अगले 7 दिन में साइट कोड करके लाइव कर दी। अब हमारे जैसे बहुत सारे लोग थे जो ढूंढ रहे थे उस टाइम इन्फॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल नीड, और ये नहीं पता था कि कार देखो इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी इवेंचुअली, तब बस अपने मज़े के लिए बनाई थी वो साइट की। और उस पर फिर ट्रैफिक आने लग गया क्योंकि लोग ढूंढ रहे थे, ऐसी वो अच्छा कर लिया था हमने। ट्रैफिक बढ़ता गया। 2010 तक हम लोग, पहले ऐसे होता था कि 500 कस्टमर हो गए आज, मतलब 1000 कस्टमर हो गए आज, मतलब इस टाइप की ट्रैफिक हो गया। आई मीन नॉट कस्टमर, ट्रैफिक। अब हम लोग करते हैं ऑलमोस्ट 100 मिलियन विजिट्स अ मंथ। 100 million in a month. या तो ये हमारा अभी करंट स्टैट्स है। Amazing. तो आई थिंक जो टिपिंग पॉइंट हमारे लिए रहा वो रहा कि लोगों को जब स्मार्टफोन आया, दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन डिजिटल हो गई। और मुझे क्या लगता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो फेंस पे बैठे होंगे एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए, बिग चेंज दैट हैज हैपेंड कि पहले जो बहुत पैसे वाला होता था वही धंधा चालू कर सकता था, क्योंकि फैक्ट्री लगाने में बहुत पैसा लगता था, आपको डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बनानी पड़ती थी ऑफलाइन, उसमें बहुत पैसा लगता था। अब क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डेमोक्रेटाइज, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सबके हाथ इंटरनेट की एक्सेस, आपका प्रोडक्ट का एक्सेस है, आपके प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एवरीथिंग, राइट। आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, डालो, लाखों लोग तक डे 1 में पहुंच जाएगा। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हुआ, गवर्नमेंट ने यूपीआई बनाया, पेमेंट्स ईजी कर दिए, इतना कुछ इंडिया में जो लेओवर हुआ है उसके ऊपर बिल्ड करना आसान है। एंड दैट इज़ वॉट इज़ फंडामेंटली चेंज। दैट्स व्हाई आई पर्सनली थिंक कि ये इंडिया का सेंचुरी है लिटरली। इतने सारे एंटरप्रेन्योर बनेंगे। मैं शार्क टैंक में भी जाता हूँ, वहाँ पर इतने छोटे छोटे शहरों से लोग आते हैं जो करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं, 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं, बहुत छोटे से शहर थे। तो इतनी खुशी होती है देखिए कि इंडिया बदल रहा है, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उनके टाउन में, उनके थ्रू। साथ ही साथ अगर वो नौकरी करने जाता उस शहर से तो कुछ नहीं मिलता, सपने बड़े हो गए लोगों के। एंड दैट्स व्हाट आई एम प्राउड ऑफ, दिस इज न्यू इंडिया। Do you want to know what has changed between then and now, or do any of you want to ask Mr. Anil Agarwal a question of, do entrepreneurs really behave differently when they are at your stage? You want to ask? No, I mean, I usually ask all rock stars, like what keeps you motivated? I mean, like how do you get up? Okay, you are the rock star, and what keeps you motivated? Yeah, like, like to get up and keep doing it, so. It's time change. When we were growing up, we always wanted a car. I never sat in the car till the age of maybe 13, 14 with a 4-door. I said, I want to have all the... So as you grow, you want a car, you want to see the big car, you want a house, you want... But as you grow, I think the thing change. Today, trust me, only thing which make me very happy when I feel my youngster are growing. That has given me the most joy. I definitely want innovative, risk-taking. I can take step. I can take still like I take a lot of step. In our time, the transparency was not there. We had the income tax of 99%. We never had the transparency. Today, if you ask youngster, they have only one book. We used to have 3 books. One to show our father and the family, one for ourselves, one for the government. That has changed. That has changed. But inspire me, I want to see my country to be a developed nation. No question. Well said, and when the Doyen speaks clearly, it is the world of experience behind him and a golden future that he can see for a country that has changed so much. Thank you so very much to my panel here, Mr. Amit Jain, Mr. Anil Agarwal, and Mr. Nikhil Kamath. Thank you for being with us.